बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिशाइम। इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 6 यूनिट नंबर 4 मेजर शबीर शरीफ शहीद की एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 37 38 पेज नंबर पर। यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है 37, यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन और यहाँ तक इसका आंसर है गुजरात तक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है 38 पेज नंबर पर। यहाँ से ही वाज टास्क्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 38 पर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट है 39, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप नोट कर लें। 10 नेम्स बताने हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर्स यू नो हु हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक्स ऑफ निशाने हैदर। ये नेम्स हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। We are protectors of our nation and guards our motherland at all costs. ये भी नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास, यूज अ सिमिलर below in sentence of your own in your notebook. The floor is as cold as ice. This tissue paper as light as a feather. He swims like a fish. He is as wise as an owl. They fight like cats and dogs. I am as happy as a lark. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, राइट सेंटेंस ऑन दिस फ्रेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक। हमने उन्होंने वर्ड दिया हुआ है, उसके साथ हमने इनका सेंटेंस बनाना है। एग्री विद, ही डज नॉट एग्री विद माई प्रपोजल। काम डाउन फॉर अ मिनट एंड लिसन टू मी। फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गिव अप, इट वॉज टू अर्ली टू गिव अप होप। होल्ड ऑन अ मिनट। नेक्स्ट हमारे पास, राइट सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग इडियम्स। इडियम्स के साथ हमने सेंटेंस बनाना है। कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। किल 2 birds with 1 stone, दिस वॉज वन वे टू किल 2 birds with 1 stone. Lend a hand, if we all lend a hand, the work will go quickly. Under the weather, my son did not go to school today because he was under the weather. In each sentence, underline the personal pronoun and circle it in instant. The students waited for their result eagerly. Students को हमने अंडरलाइन करना है और देर को हमने सर्कल करना है। अफशा वेव टू हर फ्रेंड सुंदस, अफशा को हमने अंडरलाइन करना है, हर को हमने सर्कल करना है। मिसेस अफशा वॉज वेरी हंग्री सो शी फिनिश्ड द होल पिज़्ज़ा, अफशा को हमने अंडरलाइन करना है, शी को हमने सर्कल। द प्रेसिडेंट सेट इन हिज चेयर, प्रेसिडेंट को हमने अंडरलाइन करना है, हिज को हमने सर्कल करना है। अली लव्स हिज कैट, अली अंडरलाइन होगा और कैट को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर सिंपल और कंपाउंड। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड भी सिंपल। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल। ही वॉज सिक बिफोर ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस बिलो इन देयर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी को हमने सेंटेंस को नेगेटिव और इसी को हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ही वॉज watering the plants, he was not watering the plants, was he watering the plants? Children were flying kites, children were not flying kites, were children flying kites? Next, read the words below and their meanings. इसके हमने मीनिंग्स लिखने हैं, ये मीनिंग्स लिख लें। नेक्स्ट है, read the sentence and circle the correct meaning of highlighted words. Mohsin walked in the hot desert without water. Dry and sandy place. Please share your telephone number and miracle value. The wound stopped hurting after he put on an ointment. Injury. The swimmers drove into the pool. A small whiteboard. इस वीडियो में हमने क्लास 6 यूनिट नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।